Okay, this is third set of paper and we are doing short question answer here. पहला सवाल आपका है about forward and reverse reactions and you have to explain it with the help of examples. So first you define it. The reversible reaction is the one which move in both directions and it is shown with the help of half-headed arrows. And here we are showing certain reactions. So we have hydrogen iodide formation. So it must be I here which is missing. You can clearly see it's really okay. Now you supposed to write the reversible reaction and split it into forward reaction and backward reaction. So in the forward reaction, hydrogen iodide is forming. It's not H2, it is Hi. So it's just a mistake. So in a reverse reaction, you are consider it as hydrogen iodide is converting into hydrogen and iodine. So it's a decomposition formation reaction, synthesis reaction, and decomposition reaction. Forward way it's synthesis, backward it's synthesis, it's decomposition, sorry. So ammonia is one of the very major process. So forward reaction is ammonia synthesis and reverse reaction is ammonia decomposition reaction, right? So you write it just in the splitted way. Next is carbon is the main constituent of hydrocarbon. We all know why some are called unsaturated hydrocarbon. Briefly describe. So उसने reason आपसे मांगी है कि हम unsaturated क्यों कहते हैं. Do you remember about saturated solution and unsaturated solution? Saturated solution जो complete भरा हुआ हो, full हो, and unsaturated is one जिसमें मज़ीद capacity हो solute के dissolve होने की एक certain temperature के ऊपर. So same इसी तरह से है कि अगर आपकी carbon chain full of hydrogens है, मतलब उसमें it doesn't have capacity to add more hydrogen in it, तो वो saturated है. और unsaturated वो है जिसमें number of hydrogens कम है and you may add number of hydrogens in it. So obviously ऐसा कब होता है जब हमारे पास alkene हो या alkyne हो, double या triple bond अगर आपकी chain में है तो आपके पास है ability इस चीज़ की कि यार we can do addition reaction और हम एक नई चीज़ बना लेते हैं. So you can define it in this way. Then we have the next question here. Briefly explain the source, harmful effect, physical properties of oxides of nitrogen. Achha. Nitrogen oxides, SOxes and NOxes, we know that they are harmful for our environment और especially जितने भी motor vehicles आप use करते हैं, ये जो हम fuel use कर रहे हैं, they contain certain amount of nitrogen. So नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही है. आपके जितने पावर स्टेशन है, जितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम कर रही हैं, दे ऑल आर कंट्रीब्यूटर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एयर. अब उसका प्रॉब्लम क्या आता है? उसका प्रॉब्लम एसिडिक रेन में आता है, राइट. ऑब्वियसली नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ देयर, पानी में डिज़ोल्व होगा, एसिडिक रेन कॉज करेगा. अगर आपकी नाइट्रोजन की ऑक्साइड एयर में है, इट absorb more heat. So you know these gases are greenhouse gases और greenhouse impact जो है that ultimately cause global warming. ठीक है. और आपकी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जनरेट हो रही है उसकी वजह से हेडेक कफ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है और स्पेशली द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज़ मोस्ट अफेक्टेड वन. दैन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें ऑब्वियसली यू कैन क्लियरली इफ़ यू इवन नॉट मेमोराइजिंग तब भी आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑब्वियसली विद ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एयर, कलरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, ओडोरलेस है, वाटर सॉल्युबल है. दैट इज़ वाई कि हम ये कह रहे हैं कि पानी में डिजॉल्व होता है और एसिडिक रेन कॉज करता है ये. अगर बट दैट इज़ वन ऑक्साइड. बट इफ़ यू हैव NO2 तो इसके रेडिश ब्राउन कलर है. इसकी जो ओडोर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी पिंचिंग ओडोर and it is water soluble. Next question is draw the structure of different isomers. We have C6H14 is here. So we have 6 carbon is there and we just adjust hydrogen across it. And this is an alkane. And what is isomer? Isomer वो है जब आप एक formula दे रही हैं but the molecular formula is different, but every time when you are drawing the structure is different. तो structure कैसे different होगा? पहले आप एक linear chain बना लें, all of the carbon is in a single chain. Then 5 कार्बन चेन ड्रॉ करें और वो जो एक कार्बन आपने वहाँ से उठाया है उसको डिफरेंट जगहों पर प्लेस करके देख लें, राइट. यू कैन प्लेस इट ऑन नॉट ऑन फर्स्ट नंबर, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पर करते हैं तो वो एक सेम चीज़ हो जाएगी, ठीक है, चेन दोबारा से 6 की हो जाएगी. आप सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. और उससे आगे आप दोबारा अगर उससे आगे जाते हैं फोर्थ कार्बन पर प्लेस करते हैं तो हम फोर्थ को ही सेकंड कंसिडर करेंगे, क्योंकि जिस जगह पर सब्स्टिट्यूशन होती है हम उससे क्लोज नंबरिंग स्टार्ट करते हैं.
फिर आप 2 कार्बन्स को उठा लें, 3 की मेन चेन रहने दें और 2 कार्बन्स उठा लें और आप यू कैन स्विच इट ऑन डिफरेंट पोजीशंस. सो दिस इज़ हाउ यू फॉर्म आइसोमर. मतलब हर दफ़ा आपको एक नई चीज़ नज़र आए. दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. एंड यहाँ पर 3 हैं, आप एक और भी ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप थर्ड वाले में आपने दोनों कार्बन जो हैं वो सेकंड कार्बन पर जो है वो रखे हुए हैं. यू कैन स्विच वन ऑफ द कार्बन टू द नेक्स्ट वन. सो ये चेंज भी आ सकता है. Then we have a next question. Barium nitrate is used to produce a green color in firework. It is the product of barium hydroxide and nitric acid. You just need to, propose the equation. So simple equation क्या है? They're giving you the reactants. Barium hydroxide, it is Ba plus 2. इसकी जो oxidation state है that is plus 2. So obviously OH minus is, so BaOH whole twice is the formula. So barium hydroxide react कर रहा है nitric से and barium nitrate is forming and water is there. So हमारे पास यहाँ पर NO3 whole twice, the first one equation written here, it's 3 outside, which is a mistake. So you have to consider the second equation. NO3 whole twice is the right one. So we have two ions of nitrate. वहाँ पर nitrate का एक ion है nitric acid में, so we write 2 there. Now we have 2 hydrogen here, 2 here, and what we need to do, we have to need 4 hydrogen on the other side. So हमने water के साथ 2 लिखा है और अब आप इसको set करें oxygen and your barium ink. So yes, you can check it out. It's a balanced equation now. नेक्स्ट क्वेश्चन है, illustrate effect of acidic rain on marble metal by chemical reaction. So metal में आप आयरन ले लें, आयरन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली इट रिप्लेस हाइड्रोजन, इट कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड. और मार्बल योर कैल्शियम कार्बोनेट. सो अगर सल्फ्यूरिक एसिड है आपकी रेन में, सो हाउ इट फॉर्म्स, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर फॉर्मेशन होगी. अगर नाइट्रिक एसिड तो कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टिल रिलीज होगी एंड वाटर फॉर्मेशन होगी. सो दैट्स व्हाई योर marble buildings ruined. Then we have the next question, which is identify x and y by the chemical equation given below. आपको एक equation दी हुई है and we have the haloalkanes are there and alcoholic uh, हमारे पास मीडियम है जिसमें हम इसको डील करें. सो जिंक इज़ देयर. सो इन अल्कोहलिक मीडियम व्हाट हैपन्स दैट इट जनरेट्स डबल बॉन्ड. सो जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा, आपके पास डबल बॉन्ड आ गया एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेज देयर इज़ हाइड्रोजन वी आर एडिंग इनटू द सिस्टम. सो आपका जो डबल बॉन्ड आया नहीं बल्कि इट्स 2 जिंक इज़ हियर. सो इफ इट्स 2 obviously triple bond will be generated, right? And then in the next step we are adding 2 hydrogen. So at a time 2 hydrogen, 1 hydrogen across one bond and second hydrogen 2H is there, so it across, so it converted directly into pentane, right? So this is how it forms. Alcoholic medium, zinc picked up both of the all 4 chlorines. One zinc with 2 chlorines in chloride will form, it will be released and here the triple bond generated. And then when you add hydrogen across one bond, one hydrogen molecule and then the next one, and it converts into pentane. Then the question is monosaccharide and disaccharide difference. They both belong to the saccharide family. Monosaccharide is a single unit carbohydrate and disaccharide is a two unit, दो saccharides unit इसमें present होती हैं. मोनोसेक्राइड इज अ सिंगल यूनिट, इसलिए हाइड्रोलिसिस हम इसकी नहीं कर सकते, बट डाइसेक्राइड हाइड्रोलाइज हो जाता है. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड में आएंगे. सुक्रोज एंड माल्टोज जो हैं वो डाइसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं. देन इट्स अ क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रो मींस डिफरेंट, साइक्लिक मींस साइक्लिक कंपाउंड. सो आप कोई भी 6 member 5 member जो है वो ड्रॉ करें एंड यू कैन पुट सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एनी ऑफ द element here and you can draw it. Then the next question is list down the uses of proteins. Proteins, they are the growth units of your system, and in because amino acid is there in it, and that is used in your muscles in and your body tissues repaired by them, so you need them a lot. And your protoplasm, your cells component is very much dependent on it. And there is a gelish there's one of the protein which is gelatin that is obtained by heating bones, and it's used in your bakery goods. Then we have nucleic acid uses. This is again the core question.
Nucleic acid is one of the important part of your life of cell. It is two types, DNA, RNA, and it control it. Just mean information carrying molecule, and it control centers of the cell. This is related to it, and it also determine the inherited characteristics. Then, briefly describe major air pollutants. There are numerous. We have SOxes, NOxes, carbon monoxide, carbon dioxide. We have chlorofluorocarbons. We have tetraethyl lead compound. You can simply write it in this way. Then we have the question three: water pollutants. Household waste is a water pollutant. Industrial waste, agricultural waste, pharmaceutical industry waste. That all are air pollutant, water pollutants. Now, the question uses of urea, it is used in fertilizers to the pharmaceutical industry, then to fiber industry for synthesizing fiber, we use it. Then we have the structural formula of isopentane, pentane, and pentine. Isopentane, it's the general nomenclature when the last carbon has two carbons at a time on it. So that is isopentane. Pentane means five carbons, so we will draw it in that way. Then we have pentene. From in the little chain, you just need to put double bond, and then in pentine you have to put triple bond in the chain. This is all with the short question answers of your third set of paper.